Good day, ladies and gentlemen. In today's episode of Learning from Leaders series, we have with us Mr. Rohit Agarwal, a versatile development sector consultant hailing from Jaipur, India. He is a social entrepreneur, a creative design thinker, a marathon enthusiast, a great orator, and an unwavering fan of the legendary tennis player Rafael Nadal. Mr. Agarwal is the founder and CEO of Contri, where he provided volunteering opportunities to youngsters to encourage the culture of community service in India. The most outstanding campaign he planned and implemented was Rang De Jaipur. He has worked in the capacity of zonal manager for Skill India Mission, where he led teams across Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, overseeing various activities within the Hunar Hai To Qadar Hai project, a significant endeavor aimed at skill development. During his professional journey, he also consulted with IPE Global and KPMG in the space of women and child development projects. In January 2020, Mr. Agarwal achieved an incredible milestone by completing the Standard Chartered Dubai Marathon, covering 42 kilometers in just 5 hours and 37 minutes, a testament to his determination and physical endurance. In terms of education, Mr. Rohit Agarwal holds a Master of Science degree in Regulatory Governance from the prestigious Tata Institute of Social Sciences and earned a Bachelor of Technology (BTech) degree in Computer Science. While at TIS, he also co-founded iAccess Rights Mission, an initiative for the accessibility of students on the campus. So let us welcome Mr. Rohit Agarwal, who is not just a consultant, but a dynamic individual with a passion for making a positive impact, embracing every opportunity to learn, grow, and give back to the community. Welcome, Mr. Agarwal. Thank you, sir. Starting off with your favorite quote, "The more you sweat in peace, the less you bleed in war." It seems to encapsulate your leadership philosophy. In a landscape where many prefer the comfort of air-conditioned office roles, how do you believe young professionals can be motivated to embrace hard work early in their careers, toiling it out before expecting rewards? So this quote, "The more you sweat in peace, less you bleed in war," is something which is a famous quote, although, but to me it was told by a dear friend of mine who happens to be in army. And army and sports have been two ways of life which I have been fascinated in my life. And in both of them, there is some kind of hard work, sweat, blood, toiling in the soil, and at the end of it is the glory. You follow Rafael Nadal and you see how much they work hard, and then for 2 weeks they fight hard, and then they get to lift up the cup. Similarly for an army person, similarly for a Chak De team. So wherever you see the glory which is actually earned will have sweat and peace. And when I started Contri, I realized that is the only way forward, because there are only handful, let's say 1% of this population who are born with silver spoon. So they might have life differently, but for rest of everyone you have to earn it. So that naturally became my philosophy for leadership, for propelling anything in life, may it be project, may it be team or anything. So regarding youth, as I mentioned, that only 1% of them are privileged. So rest all of them have their struggles in life. However, they cover that with their basic luxuries, basic amenities currently which youth is having in the form of phones and headphones and movie and their lifestyle. But deep down they have their struggles of their previous generations, their families, relationships and career, stress, and all those things are just right there inside them. You just need to talk about it from heart to heart. You just need to say something which is not scripted. You just have to talk to a girl about her immediate struggle in life and she'll connect with you. Same for guys and everyone. So this helps. Definitely. I am reminded of no pain, no gain. Yes. When I was a kid, I was told by many teachers and even my parents that if you don't struggle hard, you won't achieve in your life. So I believe that's what you have contributed. Can you share some of the contemporary development realities in India? What are the major challenges you face and how do you ace them?
So if I look at India, I feel we are going through a very interesting times. Now you're talking about the challenges side of India's journey. So one I believe is that we are somewhere lacking this, civic sense, civic awareness and responsibilities. So there was time, probably in 2006 when Rang De Basanti came, हम स्कूल में थे, we used to feel motivated, कुछ creative cinema था, कुछ ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड जाके कुछ करने को कह रहा था. आई डोंट मीन कि जो उसका क्लाइमैक्स हम वो सब कर दें, लेकिन एटलीस्ट वो एक ओनरशिप लेने की बात कर रहा था. आज उससे हम बहुत दूर फील करते हैं. सेकेंड, आई बिलीव इन रिसेंट टाइम्स देयर इज एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, मे इट बी स्टेट गवर्नमेंट, मे इट बी नेशनल गवर्नमेंट. हम बहुत दूर की चीज़ से बहुत जल्दी खुश हो रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी, टाइम, रिसोर्स सब लगा रहे हैं, but we are not caring for our surroundings, our local spaces. I come from social sector background. I run this show called Country, Rang De Jaipur. मेरे लिए अजीब हो जाता है कि लोग एक कॉल पे बड़े बड़े रैलीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने ही आसपास कुछ सही करना हो, अपने आसपास सफाई करनी हो, एटलीस्ट अपनी ही आसपास की सफाई के लिए अपने ही लीडर को कुछ कहना हो, so they will try. They will take it as a pain, but other way around they will end up contributing money and everything. So that centralization and then lack of respect for constitution, and while I say constitution does not always mean big laws. Constitution also entails your fundamental duties. So while we keep crying about rights and उनका हनन हो रहा है, लेकिन what about those duties? We never promote, and in recent time we have further gone away from promoting them, talking about those things. So that is something which has been challenging, especially for country. Right. So that means that people want to work only on surface level and do not want to enter into it when they can contribute to certain big things in life, like keeping cleanliness around their houses only. Yeah, मतलब in recent times Jaipur's cleanliness has gone to a new low. Right. If I remember, it was 2017-18, हम कॉन्ट्री में रंग दे जयपुर इनिशिएट कर रहे थे. जयपुर की रैंक 29th हो गई थी from 215. Okay. And recently it is 171 with heritage and 173 for greater. Oh my God. So that goes to say कि जहाँ इंदौर 5-6 साल से 7 साल से I do not know how many years in a row नंबर 1 है, मुंबई जैसा कॉम्प्लिकेटेड शहर भी टॉप 10 में है, दिल्ली भी टॉप 10 में है, जयपुर 170s के बाद है. सेफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो आफ्टर 3 मेट्रोज जयपुर इज 4th अनसेफ सिटी इन द कंट्री. सो जब मैं इधर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी जो जिम्मेवारी है एज ए सिटीजन हम वो नहीं कर रहे हैं. दैट सिविक सेंस, आप डस्टबिन लगाते हैं ड्राई एंड वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए, वो तोड़ दिए जाते हैं, अगले दिन तोड़ दिए जाते हैं. लेट अलोन द सेग्रीगेशन, वो एक बेसिक कलेक्शन ही हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं. सो व्हाट डज दिस टेल अबाउट जयपुर एज अ सिटी? So while country or India is a big concept, it's a diverse concept, it will have its pluses and minuses, and governance will always be there, किसी की भी सरकार हो. But this is something we need to focus. Right. I can give you a recent example. I was at Jaipur airport where there was a green dustbin and a blue one, and I chose the dustbin to throw away my litter. Yeah. और मैंने एकदम से देखा एक क्लीनर आया, उसने दोनों डस्टबिन एक ही जगह खाली किया और चला गया. मैंने उसको रोक के पूछा, मैंने कहा भाई जब 2 डस्टबिन बने हुए हैं तो तेरे को अलग अलग लेके जाना चाहिए. कहता साहब ये सब दिखावे का है. So again that was something. दिखावा, yes, थोड़ा दिखावा समझ में आता है, बट थोड़ा सब्सटेंस भी होना चाहिए. Right, That substance right. is bit missing. Right. Your diverse roles and experiences from being a marathon finisher to your work in Country demonstrate a broad skill set. Can you provide a concrete example of how your preparation and participation in physically demanding events as marathon influenced your approach to handling of stress in professional settings? Okay, so yeah, marathon is a bit close to me because that is something which I never thought I would be doing in my life. Given my physiology, marathon is something which do not suit me naturally. See, whatever we do in life, we are doing it by choice, first of all. So no one is forcing me to go on a track and run, or no one is forcing me to initiate country and then lead it, or to do a job and then pursue it. So first of all, if we choose something, then we choose wholeheartedly.
unless a case is different, then that you are forced to do something, then I cannot comment. I do not understand those kind of people who are just doing something which they do not want to do. I am not certainly the one. So while I chose to run marathon, and I realized the mammoth-ness, what entails in this challenge, I assessed myself that what is my strong point. So I realized that my mental strength is my strong point. I'm strong mentally. Physically, I need as much as to qualify to complete it. And then the way I approached marathon gave me so many insights during those preparation days, then during that run of 5 hours, and then in my recent times with my work. So मैराथन में जब आप दौड़ रहे होते हो तो यू स्टार्ट विद ऑल योर एनर्जी, बट यू रियलाइज दैट इट्स अ लॉन्ग 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 एंड फर्दर लॉन्ग journey, and you cannot exhaust all your resources now. However excited you are about I was in Dubai for this, so that international setting, Burj Al Arab, that road, it is all fascinating, but you still need to keep calm and focused. Same for country. So आप पहला रंग दे जयपुर करते हैं, आपको बड़े बड़े लोग कवर करते हैं, मीडिया में आप आ जाते हो, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, यू फील एक्साइटेड अबाउट इट, बट you need to still keep calm and focus on what is next. After a while, after 2-3 kilometers, you start to realize that now it is a machine that is running. Your fuel is your air that you keep on taking, and your legs is your machine that you keep on running. And you have to run exactly at a pace which will take you to the 42nd kilometer. If you run faster, it will exhaust. If you run slower, your mind, your patience, your temperament will dry out. So you will feel bored. Anyway, entrepreneurship or running is a lone sport. You feel your competition with yourself, with your breath, with your mental fatigue. But you have lot and lot of time. In entrepreneurship also, you have lot and lot of time. In job, you have someone else to continuously poke you कि ये करना, ये करना, ये करना, ये deliver करना है. In your own job, आप बैठे रहिए 1 महीने तक, महीने के एंड में जब पैसे नहीं होंगे तो आपको पता चलेगा. So you learn by your own surroundings. Same with marathon. And marathon आपको positives भी देता है. So I'll give you this anecdote. आप रंग दे जयपुर शुरू करते हैं, शुरुआत के कुछ 1-2 साल अच्छे जाते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं, you start to realize कि this can be a career thing and this can be an institution. But then you realize कि it's a long journey. After a while, there will be challenges, financial challenges and social challenges. So how you keep yourself calm and still moving. Something which I learned from marathon is जब आप थकने लगते हैं, let's say 10-12 kilometers later, you start to cut down your speed, but at the same time you start telling yourself that I am not stopping. So अब मैं इतना धीरे दौड़ रहा हूँ कि एक पैदल व्यक्ति भी मुझसे आगे निकल सकता है. तो शायद बाहर से देखने पर लगेगा कि ये दौड़ भी रहा है क्या, but in my mind I know that I am running. Though my speed is turtle pace, even lesser than a turtle pace, but my signal to the universe and to my mind is that I am running. Same is the case with, let's say, country or your project entrepreneurship. So let's say Corona was there. For 2 years things were standstill, and many of our contemporaries might have to shut themselves. The only learning I had from my marathon experience, which was just prior to Corona in January 2020, was that you still keep on doing something. अगर आप बाहर कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप होमवर्क कर लीजिए. यू कैन थिंक ऑफ न्यूअर आइडियाज़, क्योंकि आपके बहुत टाइम है. आइडियाज़ में पैसे नहीं लगते, राइट, है ना. आप एटलीस्ट उन आइडियाज़ को वर्ड फाइल पे और अपने लैपटॉप पे डॉक्यूमेंट तो कर सकते हैं, उसमें भी पैसे नहीं लग रहे हैं. बट यू कीप ऑन, एंड दैट वाज द रीज़न वी केम अप विद कंट्री फेलोशिप. बिकॉज अब सडनली कोरोना आ गया, अब ग्राउंड पे जा नहीं सकते, क्या करें. सो जो भी सीखा है वो किसी को सिखाते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अ बैच ऑफ सच यंग पैशनेट पीपल, लाइक माइंडेड पीपल. सो ये जो अप्रोच है जिसमें आप कहते हो कि बस एक कदम और, आप नहीं सोचते 42nd किलोमीटर के लिए, बिकॉज देन यू विल ब्रेक डाउन, फिर एक भी कदम नहीं चल पाएंगे. बट आप सोचते हो कि चलो ये 1 किलोमीटर कर लेते हैं, उस पोल तक चले जाते हैं, उस ट्री तक चले जाते हैं, एंड देन टू आवर सरप्राइज देयर इज़ अ वाटर बूथ. सो इट्स अ 1-up इन मारियो. आपको सडनली उसमें पानी मिल जाता है, लोग चीयर करने वाले मिल जाते हैं. इफ यू आर लकी यू विल गेट अ ऑरेंज जूस एंड यू आर इन द गेम. ऐसे ही जब आप कोरोना में कुछ कर रहे होते, एक फेलोशिप ख़त्म करते हो, सडनली पता चलता है कि सब जगह वैक्सीनेशन की डिमांड है, और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको कहती है कि कैन यू सपोर्ट विद द वैक्सीनेशन, एंड यू हैव अ टीम रेडी टू हिट द ग्राउंड. यू हिट द ग्राउंड इन अ रूरल राजस्थान,
एंड वहाँ से आप उस दिन तो कुछ पैसा अर्न करते ही करते हो, अपना कंट्री आगे बढ़ाते ही बढ़ाते हो, बट साथ में आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ जाते हो जो फ्यूचर में भी आपकी हेल्प कर सकता है. सो जैसे कहते हैं ना, आपदा में अवसर. मैराथन इज अ कंसिस्टेंट आपदा. यू हैव टू क्रिएट अवसर every time, every moment. Right. So that is my way of steering my professional journey, inspiring from marathon. Right. Your marathon journey reminded me of HQ that we deal in our trainings. Yeah. That is, health quotient is very important, and we have to look at our health persistently, not just कि आज कुछ कर लिया and then we forget for years and thereafter we realize it. Right. You've demonstrated your commitment to learning and self-improvement. Can you share a recent example of how you have applied new knowledge or skills to achieve your vision? Why I'm asking you this is because many professionals are good in planning, but only few are able to execute well. Yeah, that actually is the case with planning commission and their implementation. There are so many policies, they plan so many things, but on ground very less reaches out. So yeah, that gap is always there. But in my case, so my skills, my strong side is persistence. मतलब I'll fail and then I'll crawl back. So I start to announce things कि मैं ये करूँगा and for couple of week or even couple of months or say even half a year, I'll keep on saying that thing to everyone I meet. So सर मैं आपसे मिलूँगा और आपको बताऊँगा कि मैं एक सिटीजन क्लब शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको ऑन द गो उसका कॉन्सेप्ट बताने लग जाऊँगा. होता ये है कि जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं और जब आप उसके बारे में बहुत बातें करने लगते हैं, तो यू हैव ओनली टू चॉइसेस. ईदर यू बिकम अ फेक पर्सन जो बोलता ही बोलता है और कुछ करता नहीं है. सो हाउ एवर यू क्रिएट अ फसाड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड से कि नहीं हमने तो कुछ किया है. डीप इनसाइड यू नो कि यार तू 6 महीने से गाना गा रहा है और तूने उसका कुछ भी नहीं किया. सो ईदर यू एक्सेप्ट दैट शेम विद इन और यू डू समथिंग अबाउट इट. एंड इन माई केस दैट सम हाउ वर्क इन अ फैशन दैट I hit the ground. I have to hit the ground. मैं किसी ना किसी को पकड़ूंगा. I'll come to you कि सर मुझसे नहीं तो हो रहा है लेकिन मुझे करना भी है, तो क्या करें. So आप मेरे साथ चलिए. But somehow I'll hit the ground. और अगर आप ground hit करने लग जाते हैं, which is my experience of 8 years with Country now is, आपको सपोर्ट मिलने लग जाता है. Absolutely. आपको वहाँ एक और लाइक माइंडेड व्यक्ति मिलता है जिसने आपसे ज़्यादा होमवर्क किया हुआ होता है. सो यू फील स्ट्रेंथ, अ बिट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड देन वो जर्नी चल पड़ती है, वो कहानी चल पड़ती है. प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में ना गैप आता है चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का. यू नीड टू हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड. सो आई गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन. सो कंट्री आल्सो डज सस्टेनेबल प्लांटेशन. बल्क में प्लांट लगाते हैं और फिर उसे साल भर मेंटेन करते हैं. फॉर लास्ट 3-4 years वी हैव बीन डूइंग दिस, अराउंड 10,000 प्लांट्स. अब होने ये लगा है कि शहर में जगह नहीं है और शहर के आउटर में जो भी सरकारी स्कूल है या पंचायत की ज़मीनें हैं वो ऑलमोस्ट हम एग्जॉस्ट करने लगे, ऐसा हमें लगने लगा है. तो अब इस साल और हमें प्लांट लगाने हैं 5,000. अब कैसे लगाएं? सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. नाउ लक्ष्य पता है कि ग्रीन ऐड करना है, 8% जो भी राजस्थान या जयपुर का थोड़ा सा ग्रीन बेल्ट है उसको ऐड करना है. जगह नहीं है, क्या कर सकते हैं? समवन टोल्ड मी अबाउट मियावाकी टेक्निक. अब इसके बारे में कहीं दूर सुना था, कभी अप्लाई नहीं किया था, ये नहीं सोचा था कि ये हमारे लिए है. बट जब प्रॉब्लम आई कि अब जगह नहीं है तो उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और रियलाइज़ किया कि इट इज़ अ सॉल्यूशन टू ऑल दोज प्रॉब्लम अबाउट प्लांटेशन. वो कम जगह में कम समय में ज़्यादा फ्लरिश करता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, उसकी मेंटेनेंस लो है, उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा है. तो जब तक ये चीज़ थ्योरी थी, जब तक हमसे दूर थी, लेकिन जब ये प्रॉब्लम बन गई तब हमने उसको सॉल्व करना शुरू किया और आज हम मियावाकी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो अगर आपकी विजन क्लियर है, आपको आपका लक्ष्य पता है, तो फिर कोई ना कोई रास्ते से आप पहुँचने लग जाते हैं. एंड उसको पहुंचने के लिए आपके एग्जीक्यूशन भी अपने आप होने लग जाते हैं. यू जस्ट नीड टू से इट लाउड अगेन एंड अगेन. सो दैट इज हाउ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट व्हाट आई. So if I conclude it, that is having a long-term vision and just looking at that vision and saying to yourself that you have to achieve it, you have to reach it. So that's what you do in your real life. As we conclude the Learning from Leaders series, I want to express my heartfelt gratitude for your invaluable contribution. Your time, your knowledge, experiences, they have enriched us all. Thank you so much, sir, for sharing these experiences with us. Pleasure is all.